So good afternoon everyone. शुभ अपराह्न ମୁଁ ହେଉଛି ଅମ୍ଲାନ अंशुमत ସାହୁ। ମୁଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ MBBS ଛାତ୍ର ଏବଂ ମୋର NEET 2022 ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଥିଲା 424। ସୋ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8 NCERT ବାୟୋଲୋଜି କ୍ଲାସ 11 ର ସେଲ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଲାଇଫ। ତ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି कि NEET एग्जाम में सब क्वेश्चन परफेक्टली NCERT ର लाइंस ରୁ ଆସେ। तो NCERT को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़िबा होची सबथरे इंपोर्टेंट। NCERT व्यतीत आउ कोनोसी बाहर पुस्तक पढ़ियार किछि आवश्यक होई नै, सेटा पढ़ले बस टाइम वेस्ट। तो NCERT रो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ऊपर फोकस करबा, सेटा को मेमोराइज करबा, तापरे बहुत MCQ प्रैक्टिस करबा। एमिति करले नीट रे हम भलो परफॉर्म करबा। तो फर्स्ट प्रति चैप्टर पूर्व गोटे पेज था जो से चैप्टर रिलेटेड गोटे साइंटिस्ट विषय लिखा जाता है। नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करबा बहुत इंपोर्टेंट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे से साइंटिस्ट विषय रे भी क्वेश्चंस आसीछि। तो एथरे गोटे क्वेश्चन अछि अबाउट जीएन रामचंद्रन। जीएन रामचंद्रन कोन करथिले, से करथिले एटा डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। एटा गोटे एमसीक्यू आसिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो एटा इंपोर्टेंट कि जीएन रामचंद्रन हैड डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन and his analysis of protein conformations through the use of Ramachandran plot. तो एटा important। मु पूर्वरु किछि एनोटेट कर देछि, बाकी एनोटेशन सामने as we study the chapter हम करियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन होछि एटा कि जीएन रामचंद्रन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन डिस्कवर करथिले प्लस एनालिसिस ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन करथिले थ्रू द रामचंद्रन प्लॉट। सो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड इंपोर्टेंट थिंग होछि से सॉल्व करथिले स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाजन। लेट्स स्टार्ट करबा हम चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग विथ बेसिक डिफरेंस कोन? डिफरेंस या कि सब लिविंग थिंग सेल्स द्वारा गठित हो। समस्त गोटे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होछि सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बेस्ड ऑन माने सेल्स रो नंबर ऊपर डिपेंड करी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर परिबा, वेदर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम से माने जो मनकर सिंगल सेल था। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम से माने जो मनकर मोर देन वन सेल था। नो सेल कौन? सेल होची बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। माने जो भी गोटे ऑर्गेनिजम था तार सबुठारु छोटो स्ट्रक्चर जोटा कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस सेटा होची सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम गोटे सेल द्वारा माने समान गोटे ही सेल थाए, सेही सेल सेही ऑर्गेनिजम, और समान कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ कोन? न्यूट्रिशन माने किछि खाद्य नेले सेटा डाइजेशन करले, तापरे वेस्ट प्रोडक्ट को इजेशन करले, वाटर इनटेक करले, मेटाबॉलिज्म करले, ये सब होचे एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो गोटे सिंगल सेल ए सब एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ करे अपन कैपेबल। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। गोटे सेल रो किछि भी माने सेल होचे बेसिक यूनिट। गोटे सेल एटलीस्ट दरकार फॉर ऑर्गेनिज्म टू फंक्शन एंड एग्जिस्ट। तो less than anything less than a cell does not ensure independent living. It is same also. Now 83 scientist na ache, it was important. That question is one. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Live cell first discover करथिले Anton von Leeuwenhoek. और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथिले न्यूक्लियस। एठे मोर एक्स्ट्रा पॉइंट अछि, रॉबर्ट हुक फर्स्ट सेल डिस्कवर करथिले। फर्स्ट सेल डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक। लाइव सेल डिस्कवर करथिले एंटन von Leeuwenhoek और न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले रॉबर्ट ब्राउन। तापर सेल थ्योरी एई पार्ट रो बहुत क्वेश्चन आछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एठे बहुत छोटो छोटो डिटेल अछि जोडा मन रखा होछि बहुत इंपोर्टेंट। फर्स्ट डिटेल होछि मैथियस लीडन 1838 गोटे जर्मन बोटानिस्ट। नीट एग्जाम रे एमएलबी क्वेश्चन आछि कि मैथियस लीडन जर्मन बोटानिस्ट थिले ना ब्रिटिश बोटानिस्ट थिले, अमेरिकन बोटानिस्ट थिले। तो एई छोटो छोटो डिटेल मन रखा भी बहुत इंपोर्टेंट। और ये ईयर भी एट टाइम्स क्वेश्चन रे आसी जाय, माने बहुत फ्रीक्वेंटली आसेनी, बट एई क्वेश्चंस गेम चेंजर। माने समस्त तो इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करियो, बट एई क्वेश्चन ना सॉल्व जे करियो तार भलो रैंक आसी।
तो मैथ्यूस लिडन कौन करथिले examined a large number of plants and observed all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. So मैथ्यूस लिडन कहथिले कि सब plants cell द्वारा तैयारी होइछन्ती एवं से cells मिसिक tissues of the plant बनेछन. सेही नेक्स्ट ईयर 1839 थियोडर स्वैन जे गोटे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एटा भी इंपोर्टेंट से होथिले गोटे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट से कोन कहिथिले सेम जिंस मैथ्यूस लिडन कहथिले प्लांट सब प्लांट सेल द्वारा तैयारी होइछन्ती आ थियोडर स्वैन कहथिले सब एनिमल्स सेल्स द्वारा तैयारी होइछन आ से एटा भी कहथिले जे सेल्स हैड एन आउटर thin layer which today is known as the plasma membrane. So it was an important question. Who discovered the cell membrane? Cell membrane के discover करला cell membrane और plasma membrane. Theodore Swan discovered the cell membrane. Second जिनसा से आउ conclude कौन करथिले से plant ऊपर भी study करथिले से animal ऊपर study करी cell membrane discover करथिले plus plants ऊपर भी study करथिले आउ कहिथिले कि presence of cell wall is a unique character of the plant cell. तो सब cell रे cell membrane था एटा compulsory but plant cells रे what additional unique character था सेटा होची cell wall. Next, Swan proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. now से study कर ले plants भी cells द्वारा गठित animals भी cells द्वारा गठित plant cells रे ଗୋଟେ additional unique character होची cell wall. so से ଗୋଟେ hypothesis देले सब plants और animals cells द्वारा तैयारी छै basic unit होची cells. एटा होची cell hypothesis. तो एठी आउट important question आछी सेल हाइपोथेसिस के देथिला सेल थ्योरी के देथिला सेल हाइपोथेसिस देथिले थियोडर स्वैन सेल थ्योरी देथिले स्लीडन एंड स्वैन एड लगाई स्लीडन एंड स्वैन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी देथिले स्लीडन एंड स्वैन बट सेल हाइपोथेसिस देथिले स्वैन सेटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर सेल थ्योरी रो ଗୋଟେ शॉर्ट कमिंग सेल थ्योरी कोन एक्सप्लेन करि परला सेल थ्योरी कहला कि सब ऑर्गेनिजम्स सेल द्वारा बनि छथि बट से एटा एक्सप्लेन करि परलानी कि सेल्स नुवा सेल्स केमिति क्रिएट होन सेटा ଗୋଟେ शॉर्ट कमिंग सेटा ऐड करथिले रुडोल्फ विर्को कहथिले cells divide and new cells are formed from pre-existing cells ए टर्म को कहै छै omnicellulae cellula. तो एही हाइपोथेसिस ए सेल थ्योरी को से एडिट करथिले तो नुवा लाइन ऐड करथिले फर्स्ट थिला all living organisms are composed of cells and products of cells और सेकंड इंफॉर्मेशन होची all the cells arise from pre-existing cells. एटा हला मॉडर्न सेल थ्योरी जोडा एपे एक्सेप्ट करे. It had additional information. Robert Hooke discovered cell wall while observing the cord cells. The cell membrane Theodore Swan discovered करथिले cell wall Robert Hooke discovered करथिले. Now overview of the cell. Onion cell is a typical plant cell which is a distinct cell wall. एटा में पढ़ले plant cell wall है. And just within it there is the cell membrane. Human cheek cell got animal cell तो सेतरे cell wall नथिबो सेतरे outer most होची cell membrane. Now inside each cell there is a dense membrane bound structure called nucleus. Nucleus होची जेमिति computer रा central processing unit होची CPU. Human रा central होची brain. So the cell रा central unit होची nucleus. Nucleus controls all the functions of the cell. Now nucleus रा कोन थाए? Nucleus रा थाए chromosomes. Chromosomes रा कोन थाए? Compact होई कि थाए DNA. DNA रा कोन थाए? Genetic information by genes. So nucleus contains chromosomes which in turn contain the genetic material or the DNA. The cells that have membrane bound nuclei are known as eukaryotic cells. अब cells को हमें दो टाइप रे क्लासिफाई करि परिबा prokaryotic cell and eukaryotic cell. Eukaryotic cell कोन जो मानकर membrane bound nuclei हमें nucleus एटा गोटे cell एटा होची तार nucleus रो एटा होची nuclear membrane. तो जो सेल रो न्यूक्लियस अराउंड गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था सेटा होची यूकैरियोटिक सेल और जो सेल रो न्यूक्लियस अराउंड माने सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नथिबो एम जोटे टेंस खाली कोन जो जेनेटिक मटेरियल अछि जो क्रोमोसोम अछि सेटा खाली गोटे इन अनकंडेंस्ड फॉर्म रे थिबो किछि गोटे तार चारि गोटे डिफाइंड मेम्ब्रेन नथिबो सेही केस रे सेल को कहै छै प्रोकैरियोटिक सेल और सही केस में जो अनकंडेंस्ड न्यूक्लियर सब्सटेंस जो जेनेटिक मटेरियल सेडो कहै छै न्यूक्लियोइड सेडो न्यूक्लियस को आपने न्यूक्लियोइड को तो the cells which lack a membrane bound nucleus are called the prokaryotic cells. Now in both prokaryotic and eukaryotic cells there is a semi-fluid matrix called cytoplasm. Cytoplasm got a semi-fluid matrix जोड़ा सब सेल से प्रेजेंट है
Our cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animals. Cytoplasm is the main arena of cellular activities माने सब activities nutrition हला digestion हला metabolism हला जते सब life processes अछि जोड़ा गोटे basic requirement गोटे cell रो survival ପାଇଁ से सब cytoplasm रे the various chemical reactions occur in it to keep the cell in a living state. Living state कौन living state रे metabolism दरकार और सब लाइफ प्रोसेस होगा लाइफ प्रोसेस कौन न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन ये सब होती लाइफ प्रोसेस तो ये लाइफ प्रोसेसेस मिसिंग हुए लिविंग स्टेट now besides the nucleus the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles like endoplasmic reticulum golgi complex lysosome mitochondria microbodies and vacuoles तो यूकैरियोटिक सेल्स रे न्यूक्लियस छड़ा अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ऑर्गेनेल्स कोन गोटे सेल रो छोटा पार्ट जेमिति हम बॉडी रो छोटा पार्ट हो जे ऑर्गन सेमिति सेल्स भीतर जो छोटा पार्ट जोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर है माने समस्त ऑर्गेनेल रो गोटे गोटे डिस्टिंक्ट फंक्शन था जेमिति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और पैकेजिंग में हेल्प करे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे लाइसोसोम डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करे माने बाहर जदी किछि फॉरेन बॉडी आसिला तो ताकू डाइजेस्ट करे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करे माइक्रोबॉडीज रो स्टोरेज वेसिकल्स टाइप बेसिकली वैक्यूल्स रे इधर एक्सेस ऑफ द फूड जा स्टोरेज द फूड वैक्यूल्स की वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है एटा होची गोट बेसिक डिफरेंस Ribosomes are non-membrane bound organelles which are found in all cells which are both eukaryotic as well as prokaryotic. Ribosomes membrane bound organelle नहीं हमें आगुरु पढ़िले कि prokaryotes रे कौनसी membrane bound organelle present न था membrane bound organelle केवल present था eukaryotes रे तो ribosome गोटे non-membrane bound organelle जोड़ा सब सेल्स से present है eukaryotes as well as prokaryotes और ribosome रो function कौन ribosome रो function होची protein synthesis The ribosomes cytoplasm छड़ा आउ कोठे मिलंती ऑर्गेनेल्स रे मिलंती यूकैरियोटिक सेल्स रा ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेथिरे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट अछि और राइबोसोम माने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित अटैच होती इन जनरल साइटोप्लाज्म animal cells contain other non membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division animal cells रे भी गोटे non membrane bound organelle present है जोड़ा होची centrosome सेल डिवीजन बा सेल रिप्रोडक्शन रे सेटा हेल्प करे गोटे सेल रो दीडा सेल प्रोड्यूस होला तो सेटा होची सेल डिवीजन रे सेंट्रोसोम रो रोल है सेटा एनिमल सेल्स रे प्रेजेंट है प्लांट सेल्स रे सेंट्रोसोम न था एबे सेल बिरो वेरिएशंस विषय में पढ़ा सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज डिफरेंट साइज रो डिफरेंट शेप रो सेल्स था फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा जोड़ा होची स्मॉलेस्ट सेल एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें आगुरु भी पढ़े छी 9th क्लास 10th क्लास में स्मॉलेस्ट सेल होची माइकोप्लाज्मा जोड़ा को पीपीएल भी कहा जाए पीपीएल माने प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म तार साइज होची 0.3 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया रा कोन था बैक्टीरिया रो लेंथ होची 3 to 5 माइक्रोमीटर ए सब नंबर्स इंपोर्टेंट एटा एग्जाम रे भी आसी पारे एग्जाम में एमिदिया क्वेश्चन आसी हो कि suppose go to immediate question is which of the following statements are correct or which of the following statements are wrong so statement se dekhibo bacteria cells are 0.3 to 0.5 micrometer in length तो एटा false हो तो हम यदि minutely न पढ़े थिबा कि 3 to 5 micrometer length दिया जाय तो हम इसका ट्रू मान दे पारे तो एई वैल्यूज पढ़वा होचे बहुत इंपोर्टेंट एटा इंपोर्टेंट वैल्यूज क्वेश्चन आसी पारे बाकी एनसीईआरटी रो डायग्राम्स बहुत इंपोर्टेंट एनसीईआरटी रो डायग्राम्स डायरेक्ट उठे के क्वेश्चन पेपर रे प्रिंट करा जाय सेटा पढ़िबा बहुत इंपोर्टेंट जेमिति डायग्राम रो भी क्वेश्चन आसो जेमिति एड लिखा अछि रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकॉन्केव व्हाइट ब्लड सेल्स एमोएबल columnar epithelial cells long and narrow nerve cells branched and long trachid elongated mesophyll cells round and oval ए सब जो शेप लिखा अछि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप लिखा अछि से सब शेप इंपोर्टेंट एटा रो डायरेक्ट एनसीईआरटी रे क्वेश्चन अछि एनसीईआरटी रो सब डायग्राम रो लेबलिंग भी इंपोर्टेंट ए सब लेबलिंग रो क्वेश्चन आस परियो तो एटा पढ़बा भी इंपोर्टेंट The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Egg of the ostrich होची largest isolated single cell.
Now, among the multicellular organisms, human red blood cells are 7 micrometer in diameter. Multicellular organisms are human cells of length 7 micrometer. Nerve cells are some of the longest cells. Nerve cells are the longest cells. तो जाना ही कुछ but the cells also vary in grade in their shapes. So different types of shape होती cells में are disc like, polygonal, columnar, cuboid, thread like or irregular. ये सब shapes important. Shape of the cell may vary with the function they perform. अब हम पढ़ेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स विषय. प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जोड़ा मागुर कोइली. प्रोकैरियोटिक सेल्स रो फीचर होची दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स. हला स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स. तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेगा जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स रो फीचर्स विषय. प्रोकैरियोटिक सेल्स कोन? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स. तो जब हमें डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कहबा तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स रे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस न थाए, यूकैरियोटिक सेल्स रे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस थाए. थर्ड डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स रे मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स न थाए, यूकैरियोटिक सेल्स रे मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स थाए. राइबोसोम दुईटा जगह प्रेजेंट थाए. प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली एज कंपेयर्ड टू यूकैरियोटिक. मतलब फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पिरुलम. ए चारिटा होची बैक्टीरिया सेल्स रो सबटारु कॉमन शेप्स. तापर प्रोकैरियोटिक सेल्स रो अदर फीचर्स हम देखियो. दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. Prokaryotic cells vary greatly in shape and size. Four basic shape of bacteria are important. चारटा shape रो bacteria थांती. Bacillus जोड़ा के rod shape, coccus जोड़ा के spherical shape, vibrio जोड़ा के comma shape and spirillum जोड़ा के spiral shape. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though the prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट. प्रोकैरियोटिक सेल्स मानकर समस्त सेल वाल थाए एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म गोटे प्रोकैरियोटिक सेल जोटार सेल वाल न थाए. फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. एटा तुम जानले साइटोप्लाज्म सब सेल रे थाए. सेटा होची एरिना ऑफ ऑल द सेलुलर फंक्शंस. सो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस केबे रहेगा जतरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा. हम जानते प्रोकैरियोटिक सेल रे वेल न्यूक्लियर is not membrane bound. nucleus तो वाला membrane नथा है, nuclear membrane नथा है. तो सच में well defined nucleus भी नथा है. well defined nucleus नथा है तो कौन सा nucleoid था जाएगा. genetic material is naked, not enveloped by nuclear membrane. genetic material naked था, uncondensed type था. in addition to the genomic DNA which is single chromosome or circular DNA. Now what important point of difference between prokaryotes and eukaryotes होची. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रे गोटे क्रोमोसोम थाए. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रे मोर देन वन क्रोमोसोम. सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रे डीएनए केमिति है सर्कुलर एंड many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are known as plasmids. Apart from the अब दुई प्रकार DNA है. गोटे था डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस जोड़ा को आजे इंट्रा न्यूक्लियर डीएनए. आउट था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होची प्लाज्मिड. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जोड़ा आउटसाइड द जेनोम था. आउटसाइड द जेनोम माने न्यूक्लियस रा बाहर था. सेडा को आजे प्लाज्मिड. These smaller DNA are called plasmids. Plasmids माने फंक्शन कोन? Plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. Plasmid DNA रा फंक्शन कोन? किसी यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर दी बैक्टीरिया को. एग्जांपल होची रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. ए विषय में मोर इंफॉर्मेशन ए विषय में जानेगा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर रे.
जो टाइम पढ़ेगा प्लाज्मिड बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स केमिकल दिए। नाउ बाकी सेल्स टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ वायरसेस एठी भी सेमानकर साइज देछि, एई सब साइज भी मन रखियो इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसी पारे। नाउ plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with the foreign DNA. Plasmid DNA रा आउट फंक्शन होछि मॉनिटरिंग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन DNA। एटा में बायोटेक्नोलॉजी रे पढ़ेगा जतोळ गोटे स्पेशल जीन को गोटे प्लाज्मिड रे इंसर्ट करी बैक्टीरिया भितरे इनर्ट कराबो, से टाइम रे केमिकली में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हला कि नहीं मॉनिटर सेटा करिया पे प्लाज्मिड DNA यूज कर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, एना हम जानले यूकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थाए। No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome. एटा में पढ़ले ribosome both prokaryote as well as eukaryotic cells are present. Now prokaryotes have something unique in the form of inclusion. Inclusion bodies got a special non-membrane bound organelle. Inclusion bodies रे storage हुए जेमिति यूकैरियोटिक सेल्स रे माइक्रो बॉडीज थाए, सेमिति प्रोकैरियोटिक सेल्स रे इंक्लूजन बॉडीज थाए, सेथिरे स्टोरेज हुए समानक स्टोरेज फंक्शन। बट प्रोकैरियोट्स रे इंक्लूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेन बोन मेम्ब्रेन न थाए से चले। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स रो आउट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होची मेसोसोम, समाने होचंदी इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो एटा जदि गोटे प्रोकैरियोटिक सेल, एटा प्रोकैरियोटिक सेल रा सेल मेम्ब्रेन, तो इमिति गोटे इनफोल्डिंग्स थाए, एमिति गोटे इनफोल्डिंग थाए सेल मेम्ब्रेन रो, एटा को कहा जाय मेसोसोम। एटा को कहा जाय मेसोसोम। तो इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम। मेसोसोम रा फंक्शन हमें नेक्स्ट रे पढ़ेगा। Now cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists tightly bound three-layer structure. Outermost layer को glycocalyx कहा जाए, second layer होची cell wall, और third layer होची plasma membrane. Prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, रो तीनटा layer था, outermost layer glycocalyx, second layer cell wall, और third layer plasma membrane. Each layer has a different function. Some of them different function actually. They act together as a single protective unit. Tinda jaga layer got a single protective unit body actor. Now bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure by Gram. Gram got a scientist थे जो got a staining procedure device करते थे, से staining procedure नाम होची Gram staining. ग्राम स्टेनिंग बेसिस रे हम बैक्टीरिया को दीटा प्रकार रे क्लासिफाई करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेनिंग गोटे पर्पल कलर स्टेन, से स्टेन जते बेले गोटे बैक्टीरिया कॉलोनी रे दिया हबो, जदी से बैक्टीरिया पर्पल ही स्टे करला तो से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जदी से रेड बा पिंक कलर हेगला देन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। On the basis of gram staining, gram positive and gram negative bacteria, जे stain accept कला से gram positive पर्पल, जे stain accept करला नहीं रेड का पिंक से gram negative bacteria. Glycocalyx differs in composition and thickness among the different bacteria. Glycocalyx रो भी different types of अच्छी दीटा टाइप अच्छी, गोटे होची slime layer, गोटे होची capsule. Slime layer कौन गोटे loose sheath, जदि glycocalyx गोटे loose sheath वाली अच्छी से होची slime layer, जदि glycocalyx thick out of अच्छी टाणुआ और मोटा then से capsule पर। Cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapse. Cell wall function कौन? Cell wall गोटे structural unit बना। Cell wall गोटे cell को गोटे shape दिए, गोटे strength दिए, और cell को bursting करियर prevent करे। तो इटा में जानते बाकी जताला में गोटे RBC को saline solution जो पकाया तो RBC burst करते हैं, बट गोटे plant से भी जब हम saline solution जो पकाया से burst करियो, कहीं burst करियो, sorry saline solution hypotonic solution ने RBC burst करियो, कहीं ना तक protect करे में cell wall गोटे thick और strong unit cell रो जोटा तक को strong structural support दिया और bursting और collapsing को prevent करे। Now plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similarly structural to that of the eukaryotes. Prokaryotes माना को plasma membrane similar in structure to eukaryotes माना को plasma membrane.
A special membranous structure is known as mesosome, which is formed by the extensions of the plasma membrane in the cell. एटा हम एटा पढिले कि mesosome गोटे cell membrane रो infolding एबे तार functions विषय पढिया. Mesosomes तीन प्रकार हे पारे, vesicles हे पारे, tubules हे पारे, बा lamella हे पारे. तो mesosome माने को function का फर्स्ट होची cell wall formation. यूकैरियोटिक सेल रे cell wall के फॉर्म करे, सेल वॉल सेल प्लेट रू फॉर्म हुए जोड़ा गोल्गी कॉम्प्लेक्स करा है. बट प्रोकैरियोट्स रे सेल वॉल फॉर्मेशन मेसोसोम करे. डीएनए रेप्लिकेशन मेसोसोम्स करे प्रोकैरियोट्स. डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स एटा भी मेसोसोम करे. रेस्पिरेशन कोड है सेलुलर रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रे, बट प्रोकैरियोटिक सेल रे मेसोसोम रे. सिक्रेशन प्रोसेस मेसोसोम रे. इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सरफेस एरिया केमिति इंक्रीज होची जदी एटा एमडी सर्कुलर है कि सिंपल हो जाता ना तो सरफेस एरिया सेम रहता था. बट एटा इनफोल्डिंग हला मल्टीपल फोल्डिंग्स क्रिएट हला जो सरफेस एरिया इंक्रीज करला. तो मेसोसोम सरफेस एरिया इंक्रीज करला. एंजाइमेटिक कंटेंट मेसोसोम रे डिफरेंट एंजाइम्स भी थाए. गोटे स्पेसिफिक टाइप प्रोकैरियोट्स अछि जाको सियानोबैक्टीरिया कहै छै. सियानोबैक्टीरिया पाखरे स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन थाए मेसोसोम भडिया, बट सेटा को क्रोमाटोफोर्स कहै छै. काई सेथरे क्रोमा मींस कलर, पिगमेंट माने कलर. तो क्रोमाटोफोर सेथि काई कहै छै काई ना सेथि पिगमेंट्स था. तो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन. Prokaryotes like cyanobacteria, there are membranous extensions in the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. Bacterial cells can be motile or non-motile. Motile माने जे गोटे जगह रो आउट जगह मूव करिवो, non-motile जे मूव करि परिवो. जदि bacterial cell motile हबो, they have thin filamentous extensions from their cell wall called flagella. Flagella और cilia में जानछे. एटा जदि गोटे सेल छोटो 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 मल्टीपल एक्सटेंशंस रहबो एटा होची cilia. एटा गोटे सेल यदि गोटे सिंपल एक्सटेंशन रहबो सेटा होची फ्लैजेला. लॉन्ग एक्सटेंशन रहबो सेटा होची फ्लैजेला. तो जदि सेल मोटाइल ता पाखरे फ्लैजेला रहि पारे, नले बैक्टीरियल फ्लैजेलम रो नले सिलिया भी रहि पारे. बट एडे बैक्टीरियल फ्लैजेलम रो तीनटा पार्ट्स देछि, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. बैक्टीरियल फ्लैजेलम रो तीनटा पार्ट है. एटा जदि सेल बेसल बॉडी जनरली सेंट्रियोल. जनरली बेसल बॉडी रो स्ट्रक्चर होची सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल रो स्ट्रक्चर हमें ए चैप्टर रे आगो को पढिबा. बेसल बॉडी रो स्ट्रक्चर सेंट्रियोल रो स्ट्रक्चर सहित बहुत सिमिलर. तो एडा जदी गोटे सेल ए भीतर सेंट्रियोल अछि तो एडा होची बेसल बॉडी. सेथिरु गोटे हुक पळिया गोटे छोटा स्ट्रक्चर बारिवो, सेथिरु जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर सेडा होची फिलामेंट. तो एडा होची बैक्टीरियल फ्लैजेलम रो तीनटा पार्ट, फिलामेंट, hook and basal body. The filament is the longest portion. Actually, it has the longest portion filament and extends from the cell surface to the outside. Cell surface to outside. Besides flagella, how कोन membranous extensions थाई पर bacteria रे? Pili and fimbriae. Pili और fimbriae do not play any role in motility. एटा बहुत important question. Pili और fimbriae motility रे कौन सा role play करते? मोटिलिटी कौन माने कौन? मोटिलिटी माने गोटे पोजीशन रो आउट पोजीशन को मूव करियो. फ्लैजेलम हेल्प्स इन मोटिलिटी. फ्लैजेलम क्यों इन मोटिलिटी हेल्प करियो? फ्लैजेलम ना इमीडिएटली वेविंग मोशन क्रिएट करियो जो प्रोपेल हबो सेल आगो तो सेडा मोटिलिटी हेल्प करे. बट पिली एंड फेमरे मोटिलिटी कौन सी रोल नहीं. पिली इज एन elongated tubular structure made up of special protein. Fimbriae are small bristle like fibers sprouting out of the cell. जदि पिली और फिम्ब्रिया मोटिलिटी हेल्प करथि तो ताकर फंक्शन कोन? In some bacteria they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to host tissues. Fimbriae रो फंक्शन होछि किछि बैक्टीरिया रे फिम्ब्रिया attachment of the bacteria to rocks in the streams and also to host tissue. पत्थर की को भी गोटे बेसल सरफेस बा होस्ट टिश्यू संगे बैक्टीरियल सेल को अटैच करिया पे फिम्ब्रिया हेल्प. फिम्ब्रिया गोटे स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर माने एटा जदी बेसल सरफेस एटा जदी बैक्टीरिया तो फिम्ब्रिया सेटा को बेसल स्ट्रक्चर सहित अटैच करिया पे हेल्प. राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. प्रोकैरियोट्स रे राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित एसोसिएटेड थांती. यूकैरियोट्स रे कोन सहित एसोसिएटेड थांती? यूकैरियोट्स रे राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित एसोसिएटेड थांती. बट प्रोकैरियोट्स रे राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित एसोसिएटेड थांती. साइज 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर. ए साइज इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसी परियो. द नंबर या मन रखवा बहुत इंपोर्टेंट.
and they are made up of two subunits 50s and 30s. It is important. Prokaryotic ribosomes to 70s राइबोसोम को 70s राइबोसोम एथिरो दीटा सब यूनिट है गोटे होची 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट whereas यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को अलग है यूकैरियोटिक राइबोसोम रो को 80s राइबोसोम को जाए एथिरो दीटा सब यूनिट है 60s और 40s क्या बोला तो 50s और 30s दीटा सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो दीटा मिसी के 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना है नाउ राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एटा हम जानते राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करे सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम एबे एई विषय में पढ़िबा ट्रांसलेशन जते हम ट्रांसलेशन पढ़िबा प्रोटीन केमिति राइबोसोम सिंथेसिस करे सेटा पढ़िबा सत्यवाला हम जानिबा पॉलीराइबोसोम कोन एबे बस मन रखिया कि बहुत सारा राइबोसोम गोटे सिंगल एमआरएनए कोन एमआरएनए होची मैसेंजर आरएनए सेटा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे पढ़िबा तो राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जतले गोटे सिंगल एमआरएनए सहित बहुत राइबोसोम अटैच होंती से गोटे चेन फॉर्म करे जोटा पॉलीराइबोसोम बा पॉलीसोम कहले एथरे किछि बुझिबार नै एथरे मन रखिबार अछि बुझिबा पार्टटा परे अछि जतले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़िबा राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए टू प्रोटीन तो कहली जतले हम ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन पढ़िबा सतल जानिबा कि राइबोसोम केमिति मैसेंजर आरएनए रो इंफॉर्मेशन यूज करी प्रोटीन सिंथेसिस कराए इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज बॉडी मागुर कहथली दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम कोनोसी मेम्ब्रेन द्वारा से बाउंड नाहंती सेवेंटी रिजर्व मटेरियल स्टोर हुए प्रोकैरियोटिक सेल रे जहां भी स्टोर हुए सेटा इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं नो मेम्ब्रेन फ्रीली साइटोप्लाज्म रे थांती एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडी कोन कोन एटा एग्जाम रे आस करियो phosphate granule cyanophycin granule glycogen granule and gas vacuoles blue green and purple and green photosynthetic bacteria blue green bacteria and purple and green photosynthetic bacteria रे vacuoles है gas vacuoles ये सब हो जाए examples of inclusion body अब हम स्टार्ट करिए eukaryotic cells prokaryotic cells हम जानते 5 kingdom classification monera protista fungi plantae animalia monera होची गोटे किंगडम मोनेरा जोड़ा होची यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स बाकी चारटा किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमलिया होचन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स से डिफरेंस हम आगुरु जानले तो यूकैरियोट्स सबुठ बेसिक डिफाइनिंग फीचर होची न्यूक्लियस चारि पटे गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहबो आउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एथरे प्रेजेंट रहबो इन यूकैरियोटिक cells there is extensive compartmentalization of cytoplasm to presence of membrane bound organelles membrane bound organelles of presence जो compartmentalization of cytoplasm रे cytoplasm एटा cytoplasm प्रोकैरियोट्स रे खाली cytoplasm थिला एथरे छोटो बहुत सारा organelles रे जो माने स्पेशल फंक्शंस करिवे जो द्वारा डिवीजन ऑफ लेबर हो डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट organelles करिवे यूकैरियोटिक cells possess an organized nucleus with nuclear envelope nucleus रे nuclear envelope थाए In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. That I पढ़िबा cilia flagella केमिति. Then genetic material is also organized into chromosomes. Prokaryotes रे genetic material केमिति थिला uncondensed nucleoid वाला थिला. बिना nuclear membrane रो unorganized थिला. But एथिरे organized है into chromosomes. Prokaryotic cell रे गोटे chromosome, eukaryotic cell रे more than one chromosome. All eukaryotic cells are not identical. जानचे प्लांट और एनिमल सेल्स विथ डिफरेंट 9th 10th क्लास में हम पढ़े छे कि प्लांट सेल्स रो स्पेशल स्ट्रक्चर था सेला सेल वॉल जोड़ा सेल मेम्ब्रेन बाहर गोटे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर माने सेला गोटे स्ट्रक्चर दिए गोटे शेप दिए प्लांट सेल को एंड प्लास्टिड्स कोन प्लास्टिड्स बिसरा गो पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट एनिमल सेल्स रे प्लास्टिड्स न था और गोटे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था प्लांट रे जोड़ा एनिमल्स में था एनिमल सेल्स रे इधर वैक्यूल्स present है तो small vacuoles present है or else vacuoles absent है. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. Animal cells रे centrioles है हमें starting रे ऊपर पढ़ले centrioles रे function कौन animal cells रे centriole रे function होती cell division बा cell multiplication. Centrioles are non-membrane bound organelles. Centriole रे भी membrane न था और सेटा सिर्फ animal cell रे था plant cells रे न था.
ए डायग्राम एते इंपोर्टेंट नहीं बट एई भली डायग्राम सिके सिंपल डायग्राम एग्जाम रे आसी परिबो जोठे ए सब को लेबलिंग करिया पे एग्जाम रे क्वेश्चन आसी परिबो नीट एग्जाम रे एटा को ए बी सी में दे देथिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड टू ए बी सी पचारथिबो तो सेल ऑर्गेनेल्स आइडेंटिफाई करिबा भी इंपोर्टेंट अभी पढ़ेगा सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन रेड ब्लड सेल बा आरबीसी रे सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करा आइछि से विषय रे सेही स्टडीडा में पढ़ेगा ह्यूमन रेड ब्लड सेल विषय सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन रे दिटा मेजर कंपोनेंट्स होछन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स छडा कार्बोहाइड्रेट्स भी थाए कोलेस्ट्रॉल भी थाए और बहुत किछि थाए बट मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होछन लिपिड्स और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जोथिरे प्रोटीन्स माने एम्बेडेड था मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स द मेजर लिपिड्स जोड़ा सेल मेम्ब्रेन थान संगे फॉस्फोलिपिड्स और सेटा गोटे बाइलेयर रे अरेंज था तो सेल मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहा जाय the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophilic tail towards the inner part जो लिपिड्स थांती सेमानगर गोटे पोलर हेड था और गोटे नॉन पोलर टेल था तो जो पोलर हेड था सेटा हाइड्रोफिलिक बा वाटर लविंग हम जानते सेल मेम्ब्रेन बाहर एटा जदी गोटे सेल मेम्ब्रेन एटा सेल मेम्ब्रेन बाहर एक्वस मीडियम अछि सेल मेम्ब्रेन एपडे बाहर एक्वस मीडियम अछि बट एई भितरे लिपिड्स अछि the lipids the phospholipid achindi एडा होची हाइड्रोफिलिक हेड जोडा टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फेस करे और एडा होची हाइड्रोफोबिक टेल वाटर हेटिंग बा वाटर रिपेलिंग वाटर थु दूर जीव वाटर अट्रैक्ट करिवो एडा इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन the phospholipid bilayer रे अरेंजमेंट एमिदि था हाइड्रोफिलिक हेड जो था सेटा आउटर टुवर्ड्स द आउटर एंड इनर साइड था और मझी रे था तांगर हाइड्रोफिलिक hydrophobic tail. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. Non-polar tail hydrophobic water को से repel करियो तो साको aqueous environment जो बाहर जो aqueous environment अछि सही aqueous environment को protect करिया पई सेटा towards the inner side था whereas जो polar head था सेटा outer side towards face था In addition to phospholipid, the membrane also contains cholesterol. जेमिति मु कहली cell membrane रो major constituents होचନ୍ତି lipids और proteins. In addition to lipids and proteins व phospholipids, cholesterol भी थाए, sugar भी थाए. देखो sugar. Biochemical investigation revealed that cell membranes also possess proteins and carbohydrates. The phospholipids bilayer रे प्रोटीन एम्बेडेड थांती कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट थांती तो कौन कौन होला फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल एटा होची कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेजर कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन एडा आरबीसी कथा कहबा हमें आरबीसी रो जो सेल मेम्ब्रेन अछि सेथरे रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स सबु सेल रे रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराई करे अलग अलग था बट ए जो मेम्ब्रेन आरबीसी मेम्ब्रेन रे मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी रो मेम्ब्रेन रे 52% प्रोटीन था 42% लिपिड था एडा मन रखकर So depending on the ease of extraction, the membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Integral proteins and peripheral proteins. Cell membrane phospholipid और protein द्वारा majorly constitute हुए ना cell membrane रा जो protein है सेटा को हम दीटा प्रकार रे classify करि परिबा first होची integral protein second होची peripheral protein. को basis रे on the basis of ease of extraction केते इजीली से प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करके सेल मेम्ब्रेन को बाहर करि परिबा सेही बेसिस रे इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन डीप थांती इंटीग्रल प्रोटीन एटा इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन काई केना ए प्रोटीन मेम्ब्रेन रो
आउटर साइड रो इनर साइड जे ट्रैवर्स करछि तो सेडा एटा होछि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ताकू एठो रिमूव करबा बहुत डिफिकल्ट वेरे एटा होछि पेरिफेरल एटा इंटीग्रल प्रोटीन एटा पेरिफेरल प्रोटीन आकू एक्सट्रैक्ट करबा इजी आकू एक्सट्रैक्ट करबा डिफिकल्ट तो बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन क्लासिफाई बाय peripheral protein lie on the surface while integral proteins are partially or totally buried on the membrane हम देखि परिबा एटा होछि peripheral protein just surface ऊपर अछि lie on the surface रो ऊपर just रहला एटा होछि peripheral protein whereas integral protein partially or completely buried totally buried माने पोती हे गछि integral protein totally पोती हे रहे cell membrane भितरे आउटर साइड रो इनर साइड जे ट्रैवर्स करे जो जो सेडा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहै एटा होछि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोडा के देथिले सिंगर एंड निकोलसन 1972 a year be important फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन देथिले जो मॉडल अकॉर्डिंग गोटे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रे प्रोटीन्स माने एम्बेडेड हे According to this, the gassy fluid nature of the lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Phospholipid माने जो अछनी सेही phospholipids जो गोटे fluid type characteristic दिया जाए membrane रो जो गोटे fluid type characteristic अछि सेडा phospholipid जो gassy fluid nature माने fluid like nature जो एडा जदी ए जो प्रोटीन्स माने असरे ना ए प्रोटीन्स माने एडे गोटे जगह ना ए प्रोटीन्स माने मूवमेंट भी करन ए मूवमेंट काहे हुए बिकॉज़ ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ द फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन को गोटे फ्लूइड नेचर मिले जो जो प्रोटीन्स माने सेते जो एम्बेडेड अछन से माने मूवमेंट भी कर lateral movement of proteins within the overall bilayer लिखाइ छै ए फ्लूइड नेचर जो जोडा फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड करे मेम्ब्रेन को प्रोटीन्स माने जेनी पानी रे किछ गोटे चीज भाससे सेमिदी एडा गोटे फ्लूइड नेचर दी लिपिड जो ए फ्लूइड नेचर जो प्रोटीन सेथरे फ्लोट करंती बा लैटरल मूवमेंट करंती द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन ए फ्लूइड नेचर अदर फंक्शंस कोन सेल ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन काहे जदी सपोज करो फ्लूइड नेचर न थाई कि गोटे रिजिड था ए मेम्ब्रेन टी बहुत रिजिड है सेल वॉल जेमिति रिजिड सेल वॉल गोटे रिजिड स्ट्रक्चर बट सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल सेति में एंडोसाइटोसिस बल से पारे एंडोसाइटोसिस को प्रमोट करिया पे सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी दरकार फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन सेल गोटे छोटा साइज अछि और सेल टी बड़ा साइज रा जदी ए मेम्ब्रेन फ्लूइड नथिबो कि गोटे फ्लेक्सिबल नथिबो त ए सेल रो ग्रोथ केमि देबो तो सेल ग्रोथ को फैसिलिटेट करिया पई भी फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन वेरी इंपोर्टेंट ए सब होची फ्लूइडिटी रो इंपोर्टेंस फ्लूइडिटी जो अच्छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो सेतर इंपोर्टेंस कोन इट प्रमोट्स सेल ग्रोथ फैसिलिटेट्स फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन And one of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it. Plasma membrane across it transport by molecules. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Selectively permeable का अर्थ है कि सही जिनस को across the membrane exchange by transport करिया पई ये facilitate करे जोड़ा सेल को दरकार कि सेल रो वेस्ट प्रोडक्ट सपोज एटा होची गोटे सेल को फूड दरकार और सपोज सेल को आयंस दरकार लाइक सोडियम आयन दरकार सेल को क्लोरीन दरकार तो सेटा भीतर आसे जतल दरकार नथियो सेल अलाउ करियो सेटा होची सिलेक्टिवली परमेबल माने इट विल अलाउ जतल सेल को नीड the many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport now जदि एटा गोटे सेल मेम्ब्रेन एटी किछ गोटे सब्सटेंस अछि ए सब्सटेंस को भितर आनी अपनी एनर्जी यूटिलाइज होछि बा एटीपी खर्च होछि तो सेडा को कहबो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जदि किछ खर्च होउनी
without any requirement of energy जदि किछि energy require न है कि सही सब्सटेंस टा भितर को आसी परछि सेल रो तो सेडा को जाय पैसिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient that is from higher concentration to lower concentration एडा इंपॉर्टेंट higher concentration to lower concentration सब बोलबो काइन पैसिव ट्रांसपोर्ट रे एनर्जी यूटिलाइज हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे एनर्जी यूटिलाइज हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कोन होय लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होय लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करिया पे एनर्जी दरकार जेथरे एटीपी यूटिलाइज हो तो सेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बट पैसिव ट्रांसपोर्ट रे ऑलरेडी गोटे कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट प्रेजेंट अछि तो सिंपल डिफ्यूजन सिंपली एडे सब्सटेंस अधिक अछि एडे सब्सटेंस कम अछि तो 8 टू 80 की अपने आप आसे विदाउट एनर्जी यूटिलाइज एनर्जी यूटिलाइज करा दरकारी पड़े सिंपली एडो अधिक कंसंट्रेशन अछि एडे कम कंसंट्रेशन अछि तो एई डायरेक्शन रे डिफ्यूज कर दियो किछि एनर्जी यूटिलाइज तो सेडा का जे पैसिव ट्रांसपोर्ट बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे सपोज सेल भितरे कंसंट्रेशन अधिक अछि सेल बाहर कंसंट्रेशन कम अछि बट फिर भी सेल को दरकार आउरी सब्सटेंस तो सही कम कंसंट्रेशन रो अधिक कंसंट्रेशन डायरेक्शन रे आसी पे एटीपी यूटिलाइज हो सेडा को जे एक्टिव ट्रांसपोर्ट the movement of water by diffusion is called osmosis एही पैसिव ट्रांसपोर्ट जदि एटे किछि गोटे सब्सटेंस अछि सपोज करो कोई भी सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज पैसिव ट्रांसपोर्ट रे भितरो आसो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे भी आसे पारे बट सेडा पर हम पढिया केमिति आसे बट पैसिव ट्रांसपोर्ट रे सपोज ग्लूकोज भितरो आसला सेडा होची सिंपल डिफ्यूजन बा गैसियस एक्सचेंज सबुड सिंपल एग्जांपल भितर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो बाय सिंपल डिफ्यूजन बट व्हाट इज ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस रे कोन होय ऑस्मोसिस होची मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन तो सेम पैसिव ट्रांसपोर्ट सेम डिफ्यूजन वाटर पई गोटे स्पेशल टर्म यूज हेची सेडा होची ऑस्मोसिस तति वाटर सिंपल डिफ्यूजन हेल्प रे सेल भितर आसे तो सेडा ऑस्मोसिस कहबो now as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer they require a carrier protein in the membrane to facilitate their transport a few ions or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient that is from lower to higher concentration in this energy is utilized energy dependent process which is known as active transport example hochi sodium potassium pump तो कौन कहला फर्स्ट होची polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer हम जानले कि एटा गोटे लिपिड बाइलेयर रे एटा नॉन पोलर टेल अछि तो जो भी गोटे पोलर मॉलिक्यूल कोन पोलर नॉन पोलर तो डिफरेंस जाना पोलर मॉलिक्यूल माने जार गोटे नेट पोलैरिटी गोटे सेम गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे थबा बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल बेसिकली हम एमनी कह परिया कि जोड़ा वाटर सोल्यूबल सेटा पोलर जोड़ा वाटर इनसोल्यूबल सेटा नॉन पोलर तो एठी कोन अछि एठे लिपिड्स अछि लिपिड बाइलेयर तो एठरे जोड़ा नॉन पोलर बा लिपिड लविंग माने लाइपोफिलिक जोड़ा लाइपोफिलिक हबो सेटा इजीली ए मेम्ब्रेन क्रॉस कर देबो जोड़ा लाइपोफोबिक बा हाइड्रोफिलिक बा पोलर सेटा ए मेम्ब्रेन क्रॉस करिया पे स्पेशल कैरियर प्रोटीन दरकार इंटीग्रल प्रोटीन्स रा एग्जांपल होची ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बा कैरियर प्रोटीन्स से प्रोटीन गोटे चैनल क्रिएट करंती जो थ्रू रे पोलर मॉलिक्यूल सेल भीतर को एंटर कर बिकॉज़ से लिपिड को क्रॉस करी आस परियो से लाइपोफोबिक पोलर मॉलिक्यूल तो कैरियर प्रोटीन जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो कैरियर प्रोटीन था से पोलर मॉलिक्यूल को भीतर आने पे फैसिलिटेट कर few ions or molecules that are transported across the membrane against their concentration gradient एवं कहली जति एठे कम कंसंट्रेशन अछि एठे अधिक कंसंट्रेशन अछि तो एटा को एठी के आनिया पई जनरल टेंडेंसी कोन रहबो एठी जति अधिक अछि एठी जति कम अछि बाहर हो जियो पे जनरल टेंडेंसी रहबो बट भितरु को आनिया पई एठी कम अछि एटा अधिक अछि भितरु को आनिया पई हमको एनर्जी दरकार पड़े सेडा होची गोटा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस जोथरे एटीपी यूटिलाइज हबो एंड सेडा को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहला एग्जांपल होची सोडियम पोटेशियम पंप रे कोन होय एटा जदी सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम बाहर भितरु आसे पोटेशियम भितररो बाहर को जाए बाय द सोडियम पोटेशियम पंप अब एथिरे एटीपी यूटिलाइज हो
cell wall, what a non-living rigid structure which is known as the cell wall. Cell wall होची गोटे non-living rigid structure हमें पढ़े rigid structure से cell को गोटे definite shape दिए. It forms the outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. हमें जानते हैं कि animals रे outermost layer होची cell membrane, fungi और plants रे outermost layer होची cell wall. But fungi रे और plants रे cell wall का composition अलग आता है. Plants रे cellulosic cell wall था, whereas fungi रे cell wall composition अलग आता है. Cell wall not only gives a shape to the cell but protects the cell from mechanical damage and infection. Cell wall गोटे rigid layer, गोटे बहुत tough and strong layer. तो से cell को shape तो दिए, ताकि collapse अगर prevent करे, plus protect करे mechanical damage and function. तो से गोटे strong layer गोटे extra layer, additional layer of protection. Now it helps in cell to cell interaction and provides barrier to the undesirable macromolecules. सेल मेम्ब्रेन कौन सिलेक्टिवली परमेएबल, तो सेल वॉल भी सिलेक्टिवली परमेएबल नहीं, सेल वॉल होची कंप्लीटली परमेएबल. एक्चुअली सेल वॉल को केही भी क्रॉस करि परिबो, बट सेल वॉल सही मॉलिक्यूल्स को भितर को आसे पई दबनी जोटा अनडिजायरेबल. एटा गोटे प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स. तो सेल वॉल गोटे एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जोटा अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स को भितर को आसे पई दिए. एल्गी गोटे प्लांट, तो algae cell wall, algae रे cell wall अछि made up of cellulose, galactans. It important composition of cell wall. Algae रे जो cell wall था सेटा कंपोज था cellulose, galactan, mannan और minerals like calcium carbonate. Important question, exam रे बहुत थोड़ा आछि previous question. While other plants it consists of cellulose, hemicellulose, actin and protein. Algae रे cell walls कोथरे तैयारी था cellulose, galactan, mannans and calcium carbonate. Other plants cell wall, cellulose, hemicellulose, actins and proteins consist. Cell wall of a young plant, which is known as primary wall, is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures, and secondary wall is formed on the inner side of the cell. जेतेबेले सेल यंग था सेतेबेले तारो सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल कहजे, और प्राइमरी सेल वॉल टा लिविंग था, सेकेंडरी सेल वॉल टा डेड था. तो एटा गोटे सेल, सपोज एटा होची सेल मेम्ब्रेन और एटा होची प्राइमरी सेल वॉल. एटा होची सेल मेम्ब्रेन और एटा होची प्राइमरी सेल वॉल. तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल ला, ए प्राइमरी सेल वॉल ला कैपेबल ऑफ ग्रोथ. जदी किछि ग्रोथ करे, ओ जिंस जदी ग्रोथ करे तो ऑब्वियसली लिविंग है, which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. तो एटा जदी प्राइमरी सेल वॉल थला, एटा थला सेल मेम्ब्रेन, एटा थला प्राइमरी सेल वॉल. तो परे आ गोटे सेकेंडरी सेल वॉल है जेतले सेल मैच्योर हो जाए, सेडा होची सेकेंडरी सेल वॉल, सेडा प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भीतर आसे. एटा होची सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल ला डेड था और स्ट्रांगर था और कैपेबल ऑफ इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ है, सेडा ग्रोथ करियो. The middle lamella is a layer mainly composed of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. Middle lamella कौन? Middle lamella different cell wall को एक दूसरे के साथ फिक्स करे. Example, plant cell था, suppose एटा गोटे सेल, एटा गोटे सेल, एटा गोटे सेल, एटा ए सेल रे सेल वॉल, एटा ए सेल रे सेल वॉल. तो ए दिटा को फिक्स के करला, ए दिटा को मझे गोटे सीमेंटिंग मटेरियल कि जोड़ीबा पई गोटे जो मटेरियल था सेडा होची मिडल लामेला. एडा ए प्लांट रो सेल वॉल, एडा ए प्लांट रो सेल रो सेल वॉल, एडा ए सेल रो सेल वॉल. बट ए मझे जो गोटे सीमेंटिंग मटेरियल अछि जे ए दिटा सेल को जोड़ू छे, दिटा सेल वॉल को फिक्स कर छे एक दूसरे के साथ. The middle lamella is a layer mainly composed of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella may be traversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cells. The middle lamella calcium pectate द्वारा तैयारी होता है. calcium pectate होची middle lamella का composition which holds or glues the different neighboring cells. एड़ा बुझा पड़ला. Cell wall and the middle lamella traversed by plasmodesmata. Plasmodesmata कौन? Plasmodesmata गोटे gap junction. Plasmodesmata गोटे gap junction. Gap junction का function कौन था? Communication between the cell. यदि ए सेल रु ए सेल को किछि गोटे
सब्सटेंस रे ट्रांसपोर्ट करियार अछि कि एक्सचेंज करियार अछि तो सेटा फैसिलिटेट करे प्लाज्मोडेस्माटा गोटे गैप जंक्शन तो एठे सेल वाल अछि सेल वाल अछि तो एई सेल रो एई सेल को ट्रांसपोर्ट केमे देबो थ्रू दिस गैप जंक्शन व्हिच इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तीनटा पार्ट है चारटी चारिटा ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंपोज करंती से होचंदी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम और वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड ए चारटी ऑर्गेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम और वैक्यूल ए चारटी ऑर्गेनेल को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काहे की कहै छै बिकॉज़ देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड सेमानकर फंक्शन निज निज भितर इंटरलिंक्ड अछि सेमान भितर रिलेशन अछि तो सेही माने ए चार जण मिसी गोटे कॉमन टाइप रो फंक्शन पई काम करत सेत पई ए चार जण गोटे स्पेशल सिस्टम बडा कंसीडर करा जाय छि गोटे स्पेशल ना दिया छि सेला छि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम since the functions of the mitochondria chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above they are not the part of endomembrane system endoplasmic reticulum golgi complex lysosome और vacuoles मान फंक्शन मैच करे समान गोटे कॉमन फंक्शन थाए सेमाने निज निज भितर कोऑर्डिनेट करी फंक्शन करते सेतमे समान गोटे स्पेशल सिस्टम भले कंसीडर करी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ना दिया छि सेही सिस्टम रो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसम्स कोऑर्डिनेट करंतिनी एई ऑर्गेनेल्स के समान प्रकार डिस्क्रीट फंक्शन करंती डिस्टिंक्ट अलग रे फंक्शन करंती सेतमे समान एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रो पार्ट होती एडा ही कहबा चाहिए आ कुछ बाकी मु आगुर को अछि डायग्राम्स एनसीईआरटी रो बहुत इंपोर्टेंट ए सेल मेम्ब्रेन रो डायग्राम इंपोर्टेंट थिला एडे सब जो डायग्राम अछि एनसीईआरटी रो जो डायग्राम अछि तारो तळ हेडिंग आ जहां भी लेबलिंग अछि से सब लेबलिंग ए डायग्राम भी एग्जाम रे पचार दे पारे एठे ए बी सी कर दबो ए बी सी कोन पचार किछि भी पारे एनसीईआरटी रो सब डायग्राम इंपोर्टेंट एठे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो डायग्राम अछि ए सब डायग्राम इंपोर्टेंट सब डायग्राम जत्ते डायग्राम अछि एनसीईआरटी रो तार लेबलिंग मन रखबार अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम electron microscope studies of the eukaryotic cells reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is known as endoplasmic reticulum electron microscope रे endoplasmic reticulum visible eukaryotic cells represent है गोटे नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्यूबुल वाले स्ट्रक्चर देखा जातो ट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर रो गोटे बहुत बड़ा नेटवर्क एडा होचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइनी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स रो गोटे नेटवर्क होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides the intracellular space into two distinct compartments that is luminal and extraluminal endoplasmic reticulum इंट्रासेलुलर स्पेस को दीटा कंपोनेंट रे डिवाइड करे जेमिति कि एडा होचे साइटोप्लाज्म एडा होचे न्यूक्लियस आ एडा होचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को दीटा पार्ट रे डिवाइड करला फर्स्ट पार्ट होची लुमिनल इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रालुमिनल जोड़ा होची साइटोप्लाज्म केमिति डिवाइड करला एडा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडा साइटोप्लाज्म एडा न्यूक्लियस तो एई जो पार्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर अछि ए पार्ट जोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर अछि सेडा होछि एक्स्ट्रालुमिनल कंपार्टमेंट ए पार्ट जोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भीतर अछि सेडा होछि लुमिनल कंपार्टमेंट बिकॉज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन ट्यूब्यूल्स टाइनी ट्यूब्यूल्स गोटे ट्यूब तो ट्यूब भीतर जो पार्ट अछि सेडा होछि लुमिनल ट्यूब बाहर जो पार्ट अछि सेडा होछि एक्स्ट्रालुमिनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे ट्यूब एडा गोटे ट्यूब भलिया एई भितर जो पार्ट रहला एडा होछि लुमिना ट्यूब बाहर जो पार्ट रहला सेडा एक्स्ट्रा लुमिना सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम often shows ribosomes attached to their outer surface हम जानते राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित अटैच्ड होती तो सही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा राइबोसोम सहित अटैच्ड राइबोसोम जो सरफेस रे अटैच्ड है सेडा को जाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा रे राइबोसोम न है सेडा स्मूथ देखा जाय रात एडा होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडा होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटे देखा जाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर राइबोसोम छोटा छोटा बहुत अटैच्ड है सेडा होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एथि
किछि छोट राइबोसोम कोन गोटे ग्रान्यूल टाइप स्ट्रक्चर तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर जतरा राइबोसोम अटैच थाए तो ये ग्रान्यूल्स रो प्रेजेंस जो गोटा रफ देखा जाए तो सेटा कहै रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं सेटा स्मूथ देखा जाए सेति में ताको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहै एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स अटैच टू द आउटर सरफेस which bearing ribosomes are called rough endoplasmic reticulum जो थारे राइबोसोम प्रेजेंट है सेटा को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहै जाए absence of ribosome they appear smooth and they are known as smooth endoplasmic reticulum एवं कहै rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells which are actively involved in protein synthesis and secretion एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी तुमने बुझेबी rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells which are actively involved in protein synthesis and secretion ये क्वेश्चन नीट रे प्रीवियस क्वेश्चन आसी छै अब क्वेश्चन केमिले आसीबो एमिले आसीबो डायरेक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट कहले नीट एग्जाम रे डायरेक्ट एनसीईआरटी रो स्टेटमेंट उठाई के क्वेश्चन पका तो एनसीईआरटी रो स्टेटमेंट को मेमोराइज करे इंपोर्टेंट एक्जैक्ट ए सेंटेंस आसीबो एमिली क्वेश्चन आसीबो डैश is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion option देथिबो a nucleus b nucleolus c Golgi body d rough endoplasmic reticulum की न्यूक्लियस जगह रे सपोज कर दियो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्वेश्चन में आस परिबो dash is frequently observed in the cells which are actively involved in protein synthesis and secretion आंसर कोन rough endoplasmic reticulum जदि हम एनसीईआरटी को भल से पढ़ नथिया ये क्वेश्चन हमहु आसीबो